Okay, so next is label tag. Okay, the label tag is used to define the label of the input field. हाँ, जैसे कि हम जब HTML फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहा था लॉगिन आईडी, उसके बाद उसके कंटेंट दिखा रहा था, तो यहाँ पर लेबल फील्ड इस तरह से। तो लेबल टैग इज यूज टू डिफाइन the label of the input field. You can also define a label for input tag. The label tag element doesn't render anything special for the user. However, it provides a functionality for the user in such a way that if they click on the text within the label element, the corresponding field automatically gets selected. Okay, so like by defining a label like name, date, email ID, contact number, select food is called as the label. Okay, so these are called as the label field. This one, contact number, drink, soup, dishes, order for. Clear? Okay, sir. The long program, I will send you this one. So how you define label for name, the name, label for date, date field, label for email, email ID, label for number, contact number, then label for food, select food. Okay. Then next is what we're using field set. The field set is what? Now field set tag is used to combine the group related field in a form. It creates a box around the selected field. You can define a description for the field set by using legend tag. The legend tag is used along with the field set tag to define a caption for the field set. Okay, so this is a field set. Okay, मतलब एक फील्ड में आपका सारा कंपोनेंट यहाँ पर रह गया. Okay. So how you have to define? Excuse me. In field set we define select tag,
Option 2, suppose coffee. The next is suppose soup. Select your soup option. सब खाने का चीज. और बोलो चिकन और सूप का नाम बोलो. चिकन सूप. बेबी कॉर्न सूप. राइस. बेबी कॉर्न. ओल्ड कॉर्न. बेबी कॉर्न. उसके बाद है डिशेस. बस इतना ही डालते हैं. सर आपने ऑप्शन में नंबरिंग नहीं किया. ऑप्शन है गए हो गया तो जैसे वो नंबरिंग है तो मेंटेन किया 1 2 3 4 5 6. फील्ड सेट. HTML. नींद आ रहा है तुमको? नहीं सर. नहीं पता लग रहा है. नहीं सर. ठंडा लग गया. ठंडा लग. कोरोना हो गया. पता नहीं सर. कोरोना होने पर आपको मेडिकल एडमिट होना पड़ेगा और 30,000 है. तो हम यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी सब अवेलेबल कर देंगे.
डिस्काउंट भी करा देंगे। घूम रहा है इंटरनेट। This one field set. See that? It is showing you in the this blog. Okay. This is an example of field set. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then next is a text area. Yes, please. The text area tag create a field in which the user can enter a large amount of text. One is row and column. The row attribute help the set the number of row of text will be visible without scrolling up and down field. Column attribute help to set the number of columns of the text will be visible without scrolling right or left field. Okay. So we are using text area 3 row and 16 column. So now क्या अजब सा टेंशन table tag, then in table we're defining a row.
Now check here how it is displayed text area. This one will increase automatically text area. Okay. Yes, sir. Clear. It is called as the text area where you can insert a address field. Okay. So when you are fill up the DL and online form, so the address where you are enter, it is just like this one. Clear? Yes, sir. Romijit? Yes, sir. बुझियला? आज्ञा सर. Again, sir. Next is data list. Data list tag is used to create a list of predefined option for an input field. It is a very interesting thing, data list. I define here. Option value, suppose बोलो और कोई नाम बोलो सेम चीज का कोलकाता टक भुवनेश्वर सेम नेम में बोलो Okay, now check here. कहाँ गया? नहीं दिखा रहा है.
डाटा लिस्ट स्पेलिंग ठीक है तो डाटा लिस्ट आईडी सर डाटा लिस्ट पर डीआर लिखा है सेटा छाड़ी देछंदी लाइन ब्रेकिंग पे लाइन ब्रेकिंग पे कहीं देखो नहीं जा ठीक है टेबल ये सब आपने क्लोज नहीं किया टेबल क्लोज नहीं किया आपने सर टेबलटा क्लोज करना थी हम टेबल बाहर सर क्लोजटा कर देछन स्टार्टिंग रू हम टेबल बाहर डिफाइन कर हां हां टेबलटा बाहर डिफाइन गुड फील्ड यू हैव टू पास कट पेस्ट मार दो ना कॉर्पस ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇଯିବ सर टेबलटा किंतु स्टार्टिंग रू क्लोज हे गलानी परे ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି ଟେବୁଲ ବାହାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ओहो ହଁ ସେଟା ଟେବୁଲ ବାହାରେ ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଟେବଲ ଭିତରେ ରଖିଛି ସେଠି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ this one suppose I pass here सर केंद्रापड़ा आपण लिखिथिले हाँ लास्ट था so when you type any word according to that it is display okay ये कहाँ पर स्टोर होता है जैसे कि आपका जो आईडी और पासवर्ड आप सेव करते हो तो ऑटोमेटिक दिखाता है कि नहीं कौन सा वैल्यू होगा सर अदर देन दिस आउ जदि किछ एंट्री हमें दबा कोड़ा कोड़ा माने ए चारटा बाद आउ जदि किछ एंट्री हमें दबा से नबो हाँ नब किंतु एटा अलगा एटा लिखि सिलेक्शन पय अछि ना हाँ सिलेक्शन नहीं एटा हमें जहाँ लिखियो है ना it will take it but हां तो मु सेही कहूची माने अदर देन दिस आउ जदि किछ वैल्यू नबा से सेटा कंसीडर करिवो से कंसीडर करिवो बट जोड़ा का हमें प्री डिफाइन करते हुआ माने एगुड़ा सब कुकीज रे स्टोर हो सो दैट ये इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन ए कुकीज सो दैट व्हाट हैपन मींस जो अच्छा, प्री सर। डिफाइंड सेट हो गया अगर आप कुछ भी टाइप करते हो अकॉर्डिंग टू दैट नेम इट इज सजेस्टिंग यू सर ओके सर आइदर नेम लास्ट sir. में होगा और फास्ट में इसको करेगा क्लियर ओके सर यस सर then next is output tag output tag basically it is used for the evaluation okay so I will create another form HTML
form output mul dot value equals to parse int. Parse int is a scripting language that we already know. Means it is converting the value into integer. मतलब आप जो string value pass करोगे, any value that you are taking from user, it is a string value. Now for converting that value into integer, parse int is used. Value 1 dot value into parse int value. Value 1 input type is equals to text, name is equals to value 1 then this multiply the value value 2 colon put type is equals to text, name is equals to value 2. Then here we use equals output tag, name is equals to mul for value 1 value 2 and end of output. And form tag is over. ସେ ଫର୍ମ ଟା କ୍ଲୋଜ କଲେନି, ବ୍ରାକେଟ କ୍ଲୋଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି। Output dot html. सर फॉर्म रो ब्रैकेट टा क्लोज हैनी सर कौन कहला? हेलो फॉर्म रो ब्रैकेट टा क्लोज हैनी ରହିବ ଦେଖିବା ଏ ହେଇଗଲା 20 into 40 ହେଲା ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟ କୋଉଠି କ୍ଲୋଜ ହେଇନି କହୁଛ देखले ହଁ फॉर्म okay now we are passing any value here 50 into 30 okay it is automatically evaluated this one is used when you are creating a form for taking a list of item okay taking a list and you want to evaluate
or calculate the list of item we are using this part. Okay. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir. sir. yes sir. ऐसे हर साइन को कर सकते हैं प्लस में। प्लस माइनस ये सब कर सकते हो आउटपुट टैग में. Already we know about button tag. Button tag is used to submit your information, and it is when you are click on the button, it is evaluated in the next page. That's why we are using button tag. Okay. Okay. So in the next class we go for some kind of JavaScript concept. Okay, the other part of JavaScript, higher module of JavaScripting, function, document dot element ID, then date function. Okay, तो ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो ये करने से आपका वेबसाइट का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा. ओके, क्लियर? Okay sir. Okay sir. Yes sir. ओके, Yes sir. चलो तो नेक्स्ट Sir, क्लास. କାଲି କ'ଣ ଥିଲା ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ବା କ'ଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ? संडे ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ? ସେ ମୋତେ ଆଉ ଭେରିଫାଇ କେବେ? କରି, ରୋମେଜିତ ଭେରିଫାଇ କରିନି, ମୋତେ ଦେଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବି. ଚେକ୍ ନା ନା କଲା ପରେ ରୋମିଓଜିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ କହିଥାନ୍ତେ ବା, ରୋମିଓଜିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ଓହୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ହବ ଡିଜିଟାଲ ଆଉଟ୍ରା. ମାର୍କେଟିଂ. ହଁ ସେଟା ଆଗ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲା ପରେ. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା. ଓକେ, ସୋ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କାଲି ହବନି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ପରଦିନ ହବ କହିବି. ଓକେ, ଯଦି କାଲି ହବ ଯଦି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି, ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିବି. Okay sir. Net ଆଜ୍ଞା off sir, କରି ଆଜ୍ଞା sir. ଠିକ ଅଛି, ଚलो. ରହୁଛି. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ sir. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍. Connection.